हो गया सर लाइव. Yeah, very good afternoon, everyone. Welcome you to the this fifth meeting of the series which we had this week. The fifth and last meeting of the series, friends. That is on this. Today we will be discussing the TAR issues. We have none other than Pramod Jainji, who is excellent speaker and our Central Council member also. Friends, let me also announce one scheme where the executive committee of the Guild Exchange has decided that we would be supporting the economically meritorious students who want to study CA course. So the ICI fees that will be sponsored under the scheme if the income of the father is less than 2.5 lakh. So they can they can contact us or send the email, the details, the 10-12 BCom mark sheets along with the father income and an application. So relevant announcement that we will make. Let me welcome Pramod Jainji. Welcome you, sir. With this, over to Pallavi. Thank you. Thank you. Pallavi. Thank you, Nitesh ji. Now I would like to just give a brief introduction, though the list of introduction is huge. And Pramod Kumar Jain ji needs no introduction. From the professional qualification to the professional experience, he has a long list of accolades. But I just give a brief introduction. He is a FCA, FCMA, DISA, FCS, and also a member of All India Management Association, also an insolvency professional. He has done a certificate course with CA, with CAT, and also a post-qualification certificate course on valuation of ICAI. He's a Central Council member. He's a Central Council member and also chairman of Accounting Standard Boards of ICAI and Accounting and Finance Services of Sectional Committee and Service Sector Division Council of Bureau Indian Standards. He's also a chairman of Expert Advisory Committee of ICAI and also co-chairman of Corporate Affairs Committee and also working as a member of Quality Review Board for 3 years. He is a member of SME Implementation Group of IFRS Foundation UK. He is a conceptualizer of portal www.expertpanel.in for one-stop solution for all professional queries, who has given more than 35,000 answers. He has delivered more than 1,600 lectures on various topics of income tax, corporate laws, LLP, audits, peer review, quality review on more than 200 forums. He is a senior partner at Lunawat and Company. He has authored on books of chartered accountants, documentation and compliance for audits and limited liability partnership, and goes on. With these words, I would request Pramod ji to start his deliberation. Thank you very much, Pallavi ji. Nitesh More ji, the past chairman of the EIRC, and all my dear friends. Sabko mera namaste. And I thank Nitish Bhai for inviting me to share my views on the topic which everyone is right now practicing and right now doing that work because the 30th September is the last date for the same. So I'll be asking certain questions and when I'm asking certain questions, I'll request you to give your answers on the chat box. I'll see that and then reply. And if you have any question, you can also put your questions in the chat box. I'll be looking at the chat box and replying back to you. Right, so I'll be sharing my presentation and then we'll go ahead.
Is my screen visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Yeah, thank you. So let us talk about tax audit, and mostly what we will talk about is all the practical aspects of the tax audit. Let me start with a very simple question. With a simple question. Does anyone out here who is present virtually ever do any tax audit under Section 44 AD? Does anyone out here do tax audit under Section 44 AD? You can send your answers in the chat box. क्या कोई सेक्शन 44 AD में ऑडिट करता है? Members are requested to answer in the chat box, please. सर बहुत करते हैं, बहुत लोग करते हैं, सब बोलने में लग रहा है शर्मा रहा है. नहीं, प्रवत जी तो कह रहे हैं नहीं, बाकी किसी का रिस्पॉन्स आया नहीं. यस, नरेंद्र जी, नितेश जी, काफी लोगों का यस आया. राइट, आदेश जी, सतीश जी. So let us start with the very clear mandate that there is no tax audit under Section 44 AD. 44 AD में कोई टैक्स ऑडिट नहीं होता. अगर कोई टैक्स ऑडिट होता है तो सिर्फ एक ही सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 44 AB. कभी भी आपको ये चेक करना है कि टैक्स ऑडिट है या नहीं है, just go into this section 44 AB, and if your assessee is covered under any of the 5 clauses which is given under 44 AB, then you will go and see okay which form is to be issued. Then you will go to rule 6G, then 3CA, you have to choose 3CA or 3CB, and of course 3CD is an annexure to both 3CA 3CB, and non-compliance the penalty is under section 271B. So everyone knows when is a tax audit required, when not. The 5 clauses under 44 AB, sometimes we go to Google and ask कि tax audit होगा कि नहीं होगा, friend से पूछते हैं, कहीं पूछते हैं, but everyone is chartered accountant here, so you just need not go anywhere else. Just look into section 44 AB and come to a conclusion whether tax audit is required or not. Just revising these 5 clauses of section 44 AB, in case your assessee is having engaged in the business and his turnover is exceeding rupees 1 crore or 10 crore, then his audit would be under section 44 ABA. If your assessee is having a professional income and his gross receipts is exceeding rupees 50 lakhs, then the audit would be under section 44 ABB. In case your assessee is having incomes under any of these 3 sections, 44A, BB or BBB, BB and BBB are they are for non-residents. 44 is for my goods transport agency. So in case a person is having less than 10 trucks and he is declaring income less than the deemed profit, then the audit would be under section 44 ABC. And in case the assessee is having profession which is covered under section 44 ADA, and he is declaring the profit less than the deemed profit, which is less than 50%, and its total income is exceeding the maximum amount not chargeable to tax, then the audit would be under section 44 ABT. And in case the assessee is covered under 44 AD4 and its total income is exceeding the maximum amount not chargeable to tax, then the audit would be under section 44 ABE. Iske alawa, there is no other tax audit. There is no other tax audit. Now, my one simple question out here, can a private limited company
declare its income in any specific case in the presumptive taxation? क्या वो कभी अपनी इनकम को presumptive taxation में declare कर सकती है एक कंपनी? A private limited company, can it declare? No, no, no. संदीप जी, शिव जी, मेन जी सब कह रहे हैं, निशान जी भी कह रहे हैं, सतीश जी भी कह रहे हैं no. Of course, the answer is yes. Yes. Why yes? Because section 44AE, this is mandatory. In case there is a private limited company which is owning less than 10 trucks, then it is mandatory for it to declare its income under 44AE, even though its books of accounts are prepared, they are audited. But yes, it has to declare, and if it is declaring less than the deemed profit, it would have to get the tax audit done irrespective of its turnover. If you see ITR 6, it contains the presumptive income under these three sections, the schedules out there in the ITR 6. Right? Now, if we see these 5 clauses, A is for business, B is for profession, C, D, E, these 3 are presumptive incomes. And there is a difference between C and D and D. C, there is only one condition, that if you declare less than the deeming profit, you get the tax audit done. But in D and E, apart from that less than deeming, there is another condition attached, that the total income should exceed the maximum amount not chargeable to tax. So in case of individual HUF, it is 2.5 lakhs. Now, lots of questions have been coming to me over the years where they say the assessee is in the loss, the returned income is loss, tax audit hoga kya? So loss is nowhere a criteria in any of these 5 clauses. Nowhere a criteria. So it would depend upon the turnover. Loss will not is not a criteria out, right? So now, if the assessee is covered under any of these 5 clauses, then the tax audit will be required. We'll be talking about 44AD, AD, and AB. We'll be talking about that in the next slides. But now, suppose an assessee is covered under any of these 5 clauses, then he'll have to issue the report under 3CA or 3CB. So my next question out here is, when can a assessee issue a report under 3CA? 3CA में वो कब अपना tax audit report issue कर सकता है? This is my question, please. संदीप जी का कहना है कंपनी assessee is company. Manushri ji ka कहना है, but in case of loss, his total income would be less than taxable profit. So yes, in the case of loss, if the total income, the total return is return for which he is filing, if it is that of a loss, and the turnover is not exceeding 1 crore, 10 crore, तो कोई clause है नहीं जिसमें audit होगा, right? Audit under any other law, company assessee. Okay, so everyone is getting it correct. Everyone is getting correct here, Maheshwari ji and Manushri ji, of everyone. So a simple question. Let us take a very simple case. A very simple case, that there is a private limited company incorporated on 1st of February 2023. Turnover is 15 crores. Tax audit hoga 100% sure. So in this case, where the private limited company incorporated on 1st of February 2023, turnover is 15 crores, tax audit is to be done, what you will issue, form 3CA or form 3CB? 3CA issue karenge ya 3CB? This is my question out here. रितेश जी का कहना है 3CA, शिव जी का कहना है 3CB, रमेश वर्मा जी का कहना है if statutory audit done under, then ये तो रमेश जी आप बताओगे ना, मैं I am not a chartered accountant, I am your assessee, so you will tell ना कि 3CA करेंगे 3CB. सतीश जी का कहना है 3CA, धन प्रकाश जी का 3CB, महेश्वरी जी का 3CB, ज्योति जी का कहना 3CA. The correct answer out here is, of course, 3CB. 3CB.
Pradeep ji, 3CB, the reason, only reason that as per the Companies Act 2013, if a company is incorporated on or after 1st January, if the company is incorporated on or after 1st January, then as per Companies Act, the financial year as per the Companies Act would end 31st March next year only. So under the Companies Act, there would be no audit, hence 3CB. सुजीत जी, ये कोई टेक्निकल एरर है, इससे लॉ का कोई लेना देना नहीं है, right? So because you cannot do, there is no option, hence in this case there would be an audit only under the Income Tax Act, and 3CB would be issued, ITR would be filed for March 23. So for March 24, for March 23 it would be 3CB. For March 24, which form, 3CA or 3CB? March 24 में क्या होगा? सतीश जी का कहना है ए, धन प्रकाश जी का भी कहना है 3CA, रमेश वर्मा जी का भी कहना है 3CA, पिंकी जी का भी, प्रदीप जी का भी, नाटा जी का, सबका कहना है, मनोषी जी का भी कहना है 3CA. Everyone is saying 3CA. अच्छा, do we know when we have to issue a 3CA? Hello. 1 minute. When we have to issue 3CA, when the audit is done under any other law. Now, under the Companies Act for March 24, we'll be auditing the financial statements for 14 months. What does the act says? This period का आप return भर रहे हैं, you are filling it for 12 months. So for 12 months, जब आप 12 months का रिटर्न भर रहे हैं, तो उस 12 months का ऑडिट किसी और लॉ में हुआ, आपको जी 14 months की बैलेंस शीट. So can you say to the income tax authorities, okay, take this 14 months and proportionate it? You cannot say so. You cannot say. Hence, for March 24 also, there would be 3CB. For March 24, there would be 2 audits. One under the Companies Act for 14 months. One under the Income Tax Act for 12 months. 2 audits, 2 fees. Right? Please understand, theoretically in law, that when the audit is done under any other law. Audit for what period? For the same period for which the ITR is being filed. For that period, the audit is required under any other law and you are doing it. It has to be required and then done. If it is not required and then done, still also it is not applicable. Right? Okay, let me take another just one simple question. In the case of this, say suppose there is an LLP, limited liability partnership. Naveen ji aapka question lunga bhi. In case there is a limited liability partnership and tax audit is required, तो क्या आप 3CA issue करेंगे कि 3CB? You will issue 3CA or 3CB in the case of limited liability partnership LLP. निशान जी का कहना 3CB. मनोषी वर्मा जी का कहना है 3CA. अजीत सिंह जी का भी कहना है 3CA. नाटा जी का कहना है if audit is required. ये तो आप बताओगे ना, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो. We know that only chartered accountant in practice can do a statutory audit, audit of financial statements. So he cannot say if audit is required. He has to tell required or not. Based on audit applicability of LLP. तो आप बताइए ना सतीश जी, audit होगा कि नहीं होगा? रमेश वर्मा जी का कहना है if turnover more than 40 lakhs then 3CA. आपको पता है टैक्स ऑडिट कब होता है? अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, इसी स्लाइड में देखा कि जब टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस करता है, राइट? तो जब अगर टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है रमेश जी, तो 40 लाख क्रॉस नहीं करेगा. सोचिए, प्रैक्टिकली सोचिए साथ साथ. So in case of limited liability partnership, whenever there will be tax audit required, the form which you'll have to issue is 3CA. 3CA, because
रमेश जी ने बिल्कुल सही कहा, टर्नओवर इफ इट इज मोर देन 40 lakhs देन ऑडिट इज रिक्वायर्ड अंडर द एलएलपी एक्ट। तो जब टैक्स ऑडिट होगा तो 1 करोड़ तो क्रॉस कर ही रहा होगा। 1 करोड़ क्रॉस करेगा तो 40 लाख तो क्रॉस करेगा ही करेगा। Hence, in the case of, it is not only company, even the case of LLP. So audit required under any other law. So in the case of LLP, you'll have to issue 3CA. Now my next question. The audit which is required under LLP Act, under the LLP Act, what would be the format of the audit report? The audit which is required under the LLP Act, what is the format of the audit report? ये समझ के कि only chartered accountant in practice can do audit of a financial statement, no one else. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरे अलावा कोई कर नहीं सकता और मुझे पता ही नहीं क्या करना। It cannot be that way, ना? हाँ जी, what would be the format of the audit report? Audit report format under the LLP Act, जो LLP Act में audit होगा उसका format, इनकम टैक्स का नहीं। हाँ जी, एनी व्यूज? अभी तक किसी का व्यू आया नहीं है। कोई LLP कोई ना कोई तो कर रहा होगा, या मोर देन 120 पीपल, कोई तो LLP का काम कर रहा होगा, टैक्स ऑडिट भी होगा। तो LLP के एक्ट में जो ऑडिट करते हैं, आदेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, नो फॉर्मेट डिफाइंड अंडर द LLP एक्ट, एग्रीड, बट रिपोर्ट तो इशू करते होंगे, तो क्या करते हैं? इशू करते हैं तो कौन सा फॉर्मेट लेते हैं, कहां से लेते हैं? रमेश जी, नॉन कॉर्पोरेट कौन सा फॉर्मेट? देखिए, आपके अपने इंस्टीट्यूट के 2 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बहुत बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट है। वन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सेकंड इज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऐसे कंपनीज एक्ट में भी कोई फॉर्मेट नहीं है। ऑडिट की जब कभी कहीं बात है कि इट इज ओनली योर ओन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड मोदरा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इट वुड बी SS 700 सीरीज। आपको ऑडिट रिपोर्ट के लिए कहीं नहीं देखना। मान लीजिए कि एक मंदिर कहता है मेरा ऑडिट करा दो, एक मस्जिद कहती है, गुरुद्वारा है, कोई भी है, 4 दोस्त मिलके RW कहता है मेरा ऑडिट कर दो, तो आपको ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट के लिए कोई गूगल या किसी का कुछ नहीं देखना। यू हैव टू जस्ट गो टू द इलस्ट्रेशंस ऑफ SS 700 और वहां से फॉर्मेट उठाना, राइट? तो यस, टुडे इन दिस अप टू दिस पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड कि कब 3CA इशू करना है। that practically हमने डिस्कस कर लिया। रिपोर्ट इन केस ऑफ पर्सन who is required to get the account audited, any other case 3CB, 3CT is basically particulars both for 3CA as well as 3CB, ये दोनों के लिए कॉमन है, राइट? 3CA 3CB एंड नॉन कंप्लायंस के ऊपर everyone knows penalty is 0.5% of the turnover and maximum is 1.5 lakhs. Maximum is 1.5 lakhs. Now let us understand that when there would be 44 AD, when there would be 44 ADA, and when there would be an audit under 44 AD. Let us take it through certain questions. Let us say first question. Mr. A, he started manufacturing. So उसकी जो टर्नओवर सारी की सारी कैश में थी, which is 1 crore 50 lakhs, and net profit is 8 lakhs, which is again more than 8%. Oh, sorry, less than 8%. Net profit is less than 8%. And return, he files for 8.5 lakhs. So my first question here, can Mr. A, for his manufacturing activity, where the turnover is 1.5 crores and the profit is less than 8%, avail of section 44 AD? Can he avail of section 44 AD?
रितेश जी, प्रदीप नाटा जी का कहना है नो, मयूर बांका जी का भी कहना है नो, आदेश जी का भी कहना है, जैन साहब का भी नो. So second question, in this case Mr. A would require to get its books of accounts audited. ऑडिट होगा 44 AB में. अरजीत सिंह जी का कहना है यस, सतीश जी का कहना है नो, पता नहीं इसके लिए पहले वाले के लिए. आदेश जी, रितेश जी, प्रदीप जी, संदीप जी, everyone says yes. Yes, so answer of everyone is nearly correct, that 44 AD no, not because of manufacturing में तो AD allowed होता है, but because the profit is less than 8% and hence no AD, and AB yes because it would be under section 44 ABA 1 crore को क्रॉस कर गया, hence the audit would be there under 44 AB. Second question, Miss B, she is a doctor, professional by nature. तो उसको फीस आती है less than 50 lakhs, which is 45 lakhs, और net profit is 25 lakhs, which is more than 50%. But she also sells medicines, और वो medicines का उसने GST number भी ले रखा है, जिसकी turnover उसकी 90 lakhs है, net profit है 10 lakhs, which is more than 8%, and total income is 32 lakhs. So my first question here in this bullet is, can this lady doctor, for her training activity where the profit is more than 8%, avail of 44 AD? जी मेरा क्वेश्चन है, can this lady doctor for her trading activity the profit is more than 8% avail of 44 AD? प्रदीप नाटा जी का कहना है yes, अजीत सिंह जी का कहना है yes, धन प्रकाश अग्रवाल जी का भी yes, रमेश वर्मा जी का कहना है नो, और शिव मुंद्रा जी का भी कहना है नो, नरेंद्र कुमार जैन जी का यस, जय श्री जी का भी यस. राइट. Second question, can this lady doctor where the receipt for the professional income where the receipt is less than 50 lakhs, that is 45 lakhs, and profit is more than 50%, avail of 44 ADA? Can she avail of 44 ADA? नवीन सिंगल जी का कहना है यस, प्रदीप नाटा जी का भी यस, रमेश वर्मा जी का नो, धन प्रकाश जी का कहना है यस, नरेंद्र जी का, शिव मुंद्रा जी का कहना है यस, एक आधा नो, बाकी सबका यस, अरिजीत सिंह जी का भी. थर्ड क्वेश्चन, उसका टोटल रिसीट देखिए 90 लाख आ गया उसका ट्रेडिंग से, 45 लाख आ गया प्रोफेशन से, दोनों मिला के 1 करोड़ क्रॉस कर गया. तो इन दिस केस क्या उसका टैक्स ऑडिट होगा 44 AB में? क्या उसका ऑडिट होगा 44 AB में? नवीन सिंगल जी का कहना है नो, सिन्हा जी का कहना है यस, अरिजीत जी, पल्लवी जी, प्रदीप जी सबका कहना है नो, इरफान मलिक जी का कहना है यस. देखो अभी सब ने कहा कि 44 AD ले सकते हैं, ADA ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं. जब दोनों ले सकते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, तो ऑडिट किसका करेंगे? ऑडिट किसका करेंगे? राइट. सो लेट अस सी द आंसर्स विद द रीजंस. Answer 44 AD no, 44 ADA yes, and 44 AB no. The reasons: 44 AD no, because section 44 AD says that in case the assessee is having a professional income, section 44 AD is not applicable to it. Section AD ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी अगर प्रोफेशनल इनकम है तो शी इज आउट. सो नो 44 AD. ADA में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एंड AB नो, बिकॉज भाई किसी तो क्लॉज में आए ABCDE, ऐसा नहीं है कि सबको मिलाना है. ए में नहीं आता 1 करोड़ क्रॉस नहीं कर रहा, बी में नहीं आता प्रोफेशन 50 लाख क्रॉस नहीं कर रहा, CDE आएगा ही नहीं. आएगा तभी तो ऑडिट होगा. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज, मिस सी, शी इज आल्सो ट्रेडिंग, शी स्टार्टेड हर बिजनेस. तो पहले साल के अंदर उसकी टर्नओवर 80 लाख हो गई सारी कैश में, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 4 लाख की, विच इज लेस देन 8%. रिटर्न वो भरती है 3 लाख की. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन हियर, कैन मिस सी
for her trading activity where the profit is less than 8% avail of 44 AD? Can she avail of 44 AD? No, क्योंकि प्रॉफिट लेस देन 8% है। तो पल्लवी जी, शिव जी का, नवीन जी का, प्रदीप नाटा जी का सबका कहना है सो सेकंड क्वेश्चन, महेश्वरी जी का भी सबका कहना है नो। सेकंड क्वेश्चन, कैन इन दिस केस वुड देयर बी एन ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB? क्या ऑडिट होगा 44 AB में? इरफान मलिक जी का कहना है नो, शिव जी का भी, महेश्वरी जी का भी कहना है नो, प्रदीप नाटा जी का यस, संदीप जी का नो, पल्लवी जी का नो, ज्योति जी का नो, प्रदीप नाटा जी के अलावा सबके सब यस। सेशन सर एडी में तो अरिजीत जी ऑडिट होता ही नहीं है ना। 44 एडी में तो अभी हमने पहले ही स्टार्टिंग में बोला एडी में कोई ऑडिट नहीं होता। आप 44 AB का क्लॉज बताएं जिसमें आपको लगता है कि ऑडिट होगा। मनोजी जी आप बताइए, आपको कौन से क्लॉज में, हमने पांचों डिस्कस की, ABCDE, पांचों में से किसी एक क्लॉज में तो आना चाहिए ना ऑडिट करने के लिए। इन विच क्लॉज आपको लगता है कि अगर ऑडिट होगा तो कौन से क्लॉज में? इसका जो आंसर है ऑफ कोर्स AD नो एंड AB नो। रीजन पता होना चाहिए। रीजन AD नो एवरीवन नोस बिकॉज 8% से लेस है। AB नो भाई ABCDE किसी क्लॉज में तो आए, A में आता नहीं है, 1 करोड़ से नीचे नहीं है, ठीक है। A में नहीं आता, B में नहीं आता 50 लाख से प्रोफेशन नहीं है, C में नहीं आता, D में नहीं आता, E का डाउट है जिसकी दो कंडीशन है 4484 प्लस टोटल इनकम शुड एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। हाँ, टोटल इनकम तो एक्सीड कर रही है 3 करोड़ है। 4484 में कवर्ड है क्या? 4484 क्या कहता है कि आपने पहले कभी 44AD लिया और फिर नहीं लिया तो आपको 5 साल तक ऑडिट कराना पड़ेगा। इसने तो कभी लिया ही नहीं, इसने तो कभी 44AD लिया ही नहीं। जब AD कभी लिया ही नहीं तो E भी बाहर हो गया ना, और पांचों में से किसी में नहीं आता तो ऑडिट कौन से क्लॉज में है? ऑडिट कौन से क्लॉज में है ही नहीं, बनता ही नहीं। सो यू कैन नॉट डू दिस ऑडिट। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? क्लियर, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज। मिस्टर D is also doing trading, and from trading his turnover is 95 lakhs. He also earns certain इसी बिजनेस से कह लीजिए, LIC से कह लीजिए, उसका कमीशन भी आया 6 लाख का। नेट प्रॉफिट इज 15 lakhs, total income 40 lakhs, and so from her trading activity, from his trading activity, the profit is more than 8%. So again, my first question in this case, can Mr. D for his trading activity for where the profit is more than 8% avail of 44 AD? क्या वो 44 AD ले सकता है? In this case, can the assessee where the profit is more than 8% avail of 44 AD? हाँ जी, इरफान जी का कहना है यस। मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, यस यस फॉर ट्रेडिंग। एनी अदर व्यू? अगेन showing the question, Mr. D trading activity also earns commission of 6 lakhs, but from the trading his profit is more than 8%. The return he files for 14 lakhs, right? मेशी जी कहते हैं नो, इरफान जी कहते हैं यस। एनी अदर व्यू? Currently we are having 50-50. Any other view, please? आदेश जी का भी कहना है नो। नवीन जी का कहना है यस। अगेन द रेशियो has come 50-50.
नाटक जी का कहना है नो. सेकंड क्वेश्चन आउट हियर, क्या इस केस में टैक्स ऑडिट होगा सेक्शन 44 AB में? नवीन जी का कहना है नो, संदीप जी का कहना है नो. Let us see the answers. Pradeep Nata ji का कहना है yes. Let us see the answers with the reasons. Answer is 44 AD no and AB yes. Reason? Because section 44 AD says that a person is receiving commission income, चाहे 100 रुपए का हो, 1000 का हो, लाखों का हो, अगर कमीशन इनकम आई है तो पर्सन को ही 44 AD अवेलेबल नहीं है. AB yes because ग्रॉस रिसीट तो 1 करोड़ क्रॉस कर गई ना, 95 plus 6. This case and this case are same. प्रोफेशनल इनकम आ गई, कमीशन इनकम आ गई, पर्सन ही 44 AD से बाहर, पर्सन ही 44 AD से बाहर, राइट? सो लेट अस जस्ट रिविजिट द एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 44 AD. अभी भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 80 lakhs का टर्नओवर है, 2% का प्रॉफिट है, ऑडिट होगा कि नहीं होगा? I have to always see the 44 AB's 5 clauses A, B, C, D, E. Now only A, B, C, D सबको क्लियर आता है, E में इश्यू आता है. तो let us talk about 44 AD essentials. For that, the person has to be an eligible SSE doing eligible business. So who is an eligible SSE? Only 3 type of persons are eligible SSE, and they are individual HUFN firm, no company, no LLP, not allowed. Only individual firm. तो आपको इन तीनों के अलावा you don't need to see percentage of profit, please. Percentage of profit is only when you see 44 AD. So apart from this, there is no eligible SSE, तो आपको percentage profit देखने की जरूरत ही नहीं है. And also, these three should not be availing the deduction under section 10A, 10AA, 10B, 10BA, or chapter 6A, part C, 80H onwards. मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, 80 lakhs की टर्नओवर है और 80JJAA ले रहा है, तो he is not an eligible SSE. He cannot take, even if he wants to declare 10%, 20% profit, he cannot go for 44 AD. He has to prepare the books of accounts and submit the balance sheet and profit loss. And this eligible SSE should be doing eligible business. Eligible business is what? Any business except that 44A goods transport wala. And the turnover should be 2 crores. The turnover should be less than 2 crores. अगर उसके turnover 2.5 crores है, 2.1 crore, eligible business ही नहीं कर रहा. Business ही eligible नहीं. Out. No 44 AD. No need to see the percentage of profit, please. 2 crore से ऊपर का अगर SSE individual HUF firm है, you need not see percentage of profit. He cannot avail 44 AD. Now then subsection 5(6) says that this section itself is not applicable to a person carrying profession under section 44AA or commission or brokerage or agency business. हाँ जी. Right. So in these cases, the section itself is not applicable to the person. You know, any of these 3 cases. Given in section 44 AD itself, ना आपको कोई benefit लेना तो section से ही लेंगे ना. हम इधर उधर जाने के बजाय वो section को दोबारा पढ़ लें एक बार. We have to be an ACT chartered accountant and not a ready reckoner or Google chartered accountant. And we have to declare 8% or 6% or more profit. ये 6% हम सब सोचते हैं कि other than cash, but I have to be very careful. अगर मेरे debtors हैं, मेरे चाहे सारे चेक से पेमेंट्स आती है, सब NEFT से आती हैं, वो debtors should be realized before the due date under section 139(1). यानी जब मैं ITR फाइल कर रहा हूँ 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई तक मेरे ये डेटर्स आ जाने चाहिए. अगर वो डेटर्स रियलाइज नहीं हुए तो उस पर 6% नहीं 8% लेना पड़ेगा, मिनिमम 8%. You cannot go for 6%. Right? And of course, the last thing is that it should be commensurate with the funds flow.
It cannot be like मेरा ट्यूशन इनकम है तो 4480 ले सकता हूँ, आंसर हाँ ले सकता हूँ, तो मैं बैंक में 2 करोड़ रुपए जमा कराऊं फिर कहूँ 16 लाख पे टैक्स ले लूं, ऐसा नहीं होता है, लॉजिकल पे नहीं है, लीगली भी करेक्ट नहीं है. So whatever is commensurate with your fund flow, प्लीज यू हैव एन. फिर कहते हैं 4480 का बेनिफिट क्या? 4480 का बेनिफिट ये फॉर स्मॉलर एसएससीज को कहते हैं यू डिक्लेयर व्हाटएवर इज द एक्चुअल प्रॉफिट व्हिच शुड बी 8% or 6% or more. We'll accept that. We'll not ask for the expenditures details. But top line, of course, they will ask. And funds flow, whatever you declare, they will be taking it as a profit. Any question up to this point on, please? Any question up to this point, please? नो, प्रतीक कोटेचा जगह कह रहा है. चलिए आगे चलते हैं. Now, what happens under 44ADA? We feel that if the TDS is deducted under section 194J, 44ADA ले लो. Again, here are certain conditions. Who can take 44ADA? Only an individual and a firm. No HUF, no company, no LLP, not allowed. Only individual and a firm, no one else. And which profession? Profession which are specified under section 44AA1, read with the rule 6F. No one else. No one else. And of course, the gross receipt should be less than 50 lakhs, and my deemed profit should be 50% or more, and my funds should be commensurate with the funds flow. My profit, which I declare, should be commensurate with the funds flow. So now, what are these professions जिसमें मैं 44ADA ले सकता हूँ? These are, of course, if I talk about defined under 44, specified under 44AA1, read with the rule 6F, and these are legal, medical, engineering, architect, accountancy, technical consultancy, inter-decoration, authorized representative, company secretary, film artist की पूरी line, and of course information technology. यही notified है. ये सब notified है. Right? ये specific ये section में mentioned है और उसके बाद बाकी ये notified. And here it is not dependent upon degree, please. For film artist, there is no degree. For information technology, there may not be any degree. Interior decoration, there is no degree. So part-time accountant, accountancy कर रहा है, तो yes, he is a professional. He is a professional. He is covered under, his services are covered under as a profession. So all those would be covered under 44AD. If I talk about profession, very interestingly given under 4 sections. These 4 sections are 44AA, 44ADA, 44AB, and of course 194J. Profession की बात कर रहा हूँ. 44AA की बात करें, which requires for the maintenance of books of accounts. They have got 5-6 subsections, but I'm talking just about subsection 1 and subsection 2, which talks about profession. Subsection 1, which gives the list of professionals and notified under that section through circulars, जो हमने पिछली slide में देखा, and all those have to maintain the books of accounts in case their gross exceed rupees 1.5 lakhs. So, what are the books? They say cash book, defined under rule 6F, it is given. Cash book, ledger, journal in case of accrual, then your invoices, आने का जाने का limits दे रखी हैं छोटी छोटी, and of course in case of doctors 2 more books. One is my patient register and second is my stock register. यही prescribed books हैं. जब आप 3CD में clause भरते हैं, whether the books are prescribed, then only in case of these professions the books are prescribed. In case of business or other profession, it is not prescribed, please. वहां पे no लिखना है, सिर्फ इनके केस में yes लिखना है. And subsection 2, it talks about business as well as profession, but other than 44AA1. तो प्रोफेशन यहां पर भी और यहां पर भी है. यहां पे दे रखे हैं कौन कौन से, बाकी दूसरे प्रोफेशन जो आप लोग को लगता है कि प्रोफेशन.
And in this case, the books required are, in case of the assessees individual HUF, the gross receipt turnover should be more than 25 lakhs or the profit is more than 2.5 lakhs. Other than individual HUF, the limits is 10 lakhs and 1.2 lakhs for the turnover and the profit respectively. If I talk about section 44 ADA, it talks about subsection 1. It does not talk about subsection 2. Subsection 2 wale profession cannot avail of 44 ADA. And we say 194J में TDS कट गया, सारे के सारे प्रोफेशन है. Please understand कि CPC ने कुछ कर दिया, that does not become a law. That does not become a law. The act is the law. Act is supreme. They may error. They can err. And 194J because उसके अंदर covered है मेरा royalty भी, fee for technical services भी, independent directors fees also. तो वो सब प्रोफेशन नहीं है. But yes, 194J contains profession also. और वहां पर जो प्रोफेशन है उन्होंने वो क्या रखा है कि ये प्रोफेशन है जो कि 44AA में 1 में दे रखा है, वो है, एक आधा एक्स्ट्रा है, प्लस एनीथिंग व्हिच इज नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 44AA1 जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, प्लस एनीथिंग व्हिच इज नोटिफाइड अंडर 194J. तो ऐसा क्या कोई प्रोफेशन है जो कि 194J में तो है बट 44AA1 में नोटिफाइड नहीं है? हाँ है. Those are sports persons. So sports person का TDS कटेगा 194J में because they are profession for the purpose of 194J, but they cannot avail of 44ADA. ये subsection 2 में आ जाएंगे. They cannot declare 50% if it is less than 50 lakhs. And 44AB की बात करूं तो इसमें प्रोफेशन की बात जो दो जगह होती है, एक क्लॉज बी और एक क्लॉज डी. बी में अगर 50 लाख क्रॉस करता है तो ऑडिट कराओ, और अगर आपका इस 44AD में है तो डी में अगर आपका डीमिंग प्रॉफिट जो है वो लेस देन 50, आपने अगर मोर देन 50% नहीं दिखाया. सो प्रोफेशन इंटरेस्टिंगली डिस्क्राइब्ड अंडर वेरियस सेक्शंस, राइट? Any questions up to this point? No, Kushal ji, it is not mentioned. Compensated the mentioned in the act. It is not there. But you please understand, whatever you declare, they will say, okay, whatever you declare, that is the profit. What you have declared, will accept it. Now, suppose you deposit 2 crore rupees and you say, I pay tax on 16 lakhs. 8% of 2 crores, then say okay, 16 lakhs we agree. So rest of the amount you say that it is not from here, so that is my source which is not explained, so pay tax at the rate of 78%. लॉजिकल भी नहीं है ना कुशाल जी? लॉजिकल है क्या? जितनी मेरी इनकम है उतना डिक्लेयर करूंगा, खर्चा नहीं पूछेंगे. इतनी तो सहूलियत दी है. ये थोड़ी है कि आप 8% जमा करा के कैपिटल बिल्ड करते चले, राइट? संदीप जी का क्वेश्चन है, पर्सन declared profit under section 44AD in assessment year 22-23 from future and option transaction. वैसे तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डिक्लेयर कभी भी 44AD में करना नहीं चाहिए. जो एक्चुअल प्रॉफिट आप दिखाइए, आपके पास सारा कुछ है. he is having loss from 44AD and also commission income. अब तो कमीशन इनकम है, then 44AD से वैसे ही बाहर, इसलिए नो ऑडिट. Naveen Singh Jakal ji ka question hai, first, second, third year 44AD was availed, then salary income and capital gain there was then fourth year, then again 44AD in fifth year. Is there any violation? No violation at all. You can totally take it. चलिए, great. अब एक बार हम 44ABA में हमको पता है 2 लिमिट दे रखी है, 1 करोड़ और 10 करोड़. 1 करोड़ तो है ही, 1 करोड़ क्रॉस करता है. 10 करोड़ कब है? 10 करोड़ की 2 कंडीशन है, अगर दोनों मीट आउट होती है तो 10 करोड़, अदरवाइज 1 करोड़. एंड द कंडीशन इज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इन कैश do not exceed 5% of the said amount, and aggregate of all payments made in cash do not exceed 5% of the said payment. Now let us understand this through a very, very small example. Let us take the case of this 44ABA where it is sole proprietorship. ठीक है, सोल प्रोप्राइटर है, उसकी सारी की सारी पेमेंट जो है बैंकिंग चैनल से. सो बैंकिंग इज ओके, बैंकिंग पेमेंट्स मतलब पेमेंट्स इज ओके. नाउ लेट अस सी रिसिप्ट्स.
उसकी 6 करोड़ की टर्नओवर है, जिसमें से 20 लाख कैश है, 6 करोड़ का 5% is 30 lakhs. Only 20 lakhs is in cash. All debtors etc everything realized within that year. And क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है, तो उस प्रोप्राइटर को कैश की जरूरत थी, उसको कैपिटल की जरूरत थी, उसने 25 लाख कैश में दे दिया। प्रोप्राइटर है तो उसका खुद का पैसा डाल दिया। उसको और पैसे की जरूरत थी तो उसने अपने ब्रदर से ले लिया लोन 50 lakhs का। नाउ विद दीज फैक्ट्स, is this sole proprietorship business required to get its books audited under section 44AB? क्या 44AB का ऑडिट होगा इस केस में? क्या इस केस में 44AB का टैक्स ऑडिट होगा? संदीप जी का नो, एम के मिश्र जी का यस, बन जी का, रमेश जी का यस, एक अध्ययन नो, एस के जी का यस, प्रतीक कोटेचा जी का यस, नवीन सिंगल जी का नो। लेट अस सी द आंसर। आंसर इज यस। मेरी टोटल रिसिप्ट देखनी है ना मेरे को। 675 लाख। अब मैं ये बिजनेस का रिसिप्ट पेमेंट बनाऊंगा। ओपनिंग कैश एंड बैंक, all receipts, all payments, closing cash and बैंक। मैच करेगा ना? तो जब ये प्रोप्राइटर 25 लाख रुपए डालेगा तो रिसिप्ट में आएगा ना, ड्राइंग्स आएगी तो पेमेंट में आएगी ना ड्राइंग्स। बिजनेस का रिसिप्ट पेमेंट देखना है, बिल्कुल आएगी, राइट? बिल्कुल आएगी। अभी एक दो क्वेश्चंस थे। संदीप जी क्वेश्चन, आफ्टर 5 years कैन अ पर्सन ऑप्ट आउट ऑफ 44AD? यस। एक बार उसने लिया तो 5 साल तक लेना है, उसके बाद ऑप्शन है बाहर निकलने की। Bharti, a question: if we have lost from F&O, then we do need to do audit because we cannot show profit less than 6%. किसने कहा ये? कौन से प्रोविजन में है कि you cannot show less than 6%? है ही नहीं। अभी हमने केस देखा, हमने अभी केस लिया था। अब ऑडिट के लिए 44AB में आपको जाना है, पांचों में से किसी क्लॉज में नहीं आता। A, B, C, D, E. If I have not availed of 44AD, लॉस की वजह से मेरे को ऑडिट करना है। कहां लिखा है? 44AB के किस क्लॉज में लिखा है? कहीं नहीं लिखा, राइट? ये दो क्वेश्चन आए थे तो आई आंसर्ड दैट। नाउ अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मेरा ऑडिट बनता नहीं है। यहाँ पे तो मेरा बनता है। मान लीजिए मेरी सारी की सारी रिसिप्ट और सारी की सारी पेमेंट्स दोनों ही लेस देन 5%। ऑडिट बनता नहीं है, कर दूं? मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है, कर देता हूं। एक्स्ट्रा ही तो कर रहा हूं, क्या दिक्कत है? सो इट इज मैंडेटरी और ऑप्शनल? ऑप्शनल। हमें ये कहना ऑप्शन है, बनता नहीं फिर भी कर दो, एक्स्ट्रा ही तो दे रहे हैं। एनी अदर व्यू? नो मैंडेट, यानी आपका मिश्री जी का भी कहना ऑप्शनल कि नहीं बनता तब भी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। मुंद्रा जी का कहना है मैंडेटरी। इरफान मलिक जी का भी कहना है ऑप्शनल। let us understand one thing. In none of the laws in the country, for the audit, there can be an option. आपकी मर्जी है ऑडिट करा लो, आपकी मर्जी ऑडिट मत करो। एज पर लॉ, अगर आप लॉ को छोड़ देते हैं फिर तो हमेशा ऑप्शन है। अगर लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं ऑडिट करना तो आपकी मर्जी है, कराना है करा लो। लेकिन एज पर ऑडिट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, देयर इज नो ऑप्शन गिवन। It is mandatory. It is mandatory. So if it is not required, you cannot do. If you do, my due date still remains 31st July. It does not change, please. It does not change. And because then you are giving in clause 8, और उसमें क्लॉज क्या डालेंगे? गलत डालेंगे, फिर कहेंगे ट्रू एंड करेक्ट। जब ट्रू एंड करेक्ट करेंगे
तो इनकम टैक्स वाले बोलेंगे नो दिस इज रॉन्ग, रिपोर्टिंग हैज बीन रॉन्ग। सरकार भी बोलेगी कि यू हैव बिफोर्ड द असेसीज, बनता नहीं था आपने फिर भी कर दिया। एंड देन ऑफ कोर्स आईसीआई आल्सो, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 क्लॉज 1, not required to disclose, you have disclosed much more than more। तो डीसी का केस, प्लीज मर्जी से नहीं, कारो एप्लीकेबल नहीं है आपने दे दिया, नॉट अलाउड टू गिव। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन फॉर एनी ऑडिट अंडर एनी लॉ, अंडर एनी लॉ। ऑडिटर का भी कहीं ऑप्शन नहीं होता कि आपकी मर्जी से ऑडिट करा लो, मे नहीं होता, हमेशा शैल होता है ऑडिट के। शैल डू, and if it is not covering, then you cannot do। And audit is a serious business, and of course we have to take care that in case my receipts and payments, if these are non-account pay, check or draft, then they are treated as cash, right? And please understand, this tax audit requirement is for the assessee। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बोलेगा कि ऑडिट करा लो या नहीं करा लो, असेसी बोलेगा कि मेरा ऑडिट कर दो या नहीं करो। So the call is always of the assessee, the liability, the penalty is all his only, no one else। If he wants the chartered accountant to determine whether audit is required or not, he can take the services of the chartered accountant and then determine, but the call ultimate would be of the assessee and not of the chartered accountant। So if he engages you for the same, you take your appropriate fee and give your advice, right? नवीन जी, मैंने अभी आपका देखा, लेकिन ये मैंने आपको अपने हिसाब से ही बता दिया, अपने आप ही बता दिया कि ऑलवेज असेसी। ऑडिट कराना नहीं कराना, जमा कराने की जिम्मेवारी भी जो है असेसी की है टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इट इज नॉट अस। It is he who appoints us. It is he who gives us an engagement letter to do the audit, right? So now, going further, let us see, these are the 5 cases where the presumptive incomes are there, and in which cases of less than the deemed profits audit is required. Now, if I see 44B and 44BBA, not allowed to declare less than the deeming profits, so no audit. In all other cases, if it is less than the deemed profits, my profession, my goods carriage, my exploration of mineral rights by non-resident, turnkey power project for foreign company, audit is required if you declare less than the deemed profits. And here the condition is there in, I say, C for these 3, 1, 2 and 3। डीमिंग से नीचे दिखाया तो ऑडिट, डी की बात करता तो ऑडिट के लिए एक और सर आपका ना स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, योर स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू एनीवन, एवरीवन इज टेलिंग। अच्छा, बट मेरा तो फिर एक बार स्टॉप करके दोबारा दिखाता हूँ। अब आ रहा स्क्रीन? सर yes sir, it's coming now. Okay. So for 1, 2 and 3 in 44 ABC, no other condition, आपने डीमिंग से नीचे दिखाया तो आप ऑडिट करवाइएगा। बट हम डी की बात करते हैं तो ऑडिट लेस देन ड्यू में तभी है जब टोटल इनकम इज माय एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। और बिजनेस के केस में वो 5 साल वाली कंडीशन है, if availed of 44AD and then not availed in any of the next 5 years, then audit for next 5 years। These are for small SSCs, small businesses, उनके लिए simplified system दे रखे हैं। यहाँ पे भी again 2 conditions, अगर आपका 44AD4 में covered है, then audit is required under 44ABE with another condition that the total income should exceed the maximum amount not chargeable to tax। लॉस की कहीं कोई बात आती ही नहीं है, कहीं आती ही नहीं है वो सब बात। Right,
So let us summarize this all audit business. Audit when it is the business income, then when the audit would be required. Let us see, divided into 4 limits: below 1 crore, 1 to 2 crore, 1 to 10 crore, more than 10 crores. अगर आपके एसएससी का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट होना ही होना है। आपको देखना ही नहीं है कि वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, बिजनेस इनकम है, 10 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट है, 10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, ऑडिट होना ही होना है, टैक्स ऑडिट। बट अगर एसएससी का टर्नओवर 1 से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको चेक करना है कि क्या वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या फर्म है। इन तीनों के अलावा आपको 1 से 2 करोड़ के बीच में कुछ नहीं देखना। और इन तीनों में से अगर किसी की भी 1 से 2 करोड़ के बीच की टर्नओवर है, क्या उसने 44 एडी का बेनिफिट लिया? क्या उसने अपनी रिटर्न 44 एडी में डिक्लेयर की? अगर डिक्लेयर की तो रिसीट्स और पेमेंट्स का कैश पोर्शन 100% हो सकता है। 100% cash receipt, 100% cash payment if he is going for 4480. लेकिन अगर ये इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म 4480 में नहीं जा रहे, then they have to come to this 1 to 10 crore. And for this case, their limit is not 1 to 2 crore, but 1 to 10. So 1 to 2 plus 1 to 10. And then we have to see in all cases of individual, HUF, firm, company, LLP, society, जो भी हो, 1 से 10 करोड़ के बीच की टर्नओवर है, then you have to see receipts and payments. अगर दोनों ही less than 5% है, then the limit is 10 crores. एक भी 5% को क्रॉस कर गया तो लिमिट इज 1 करोड़. Below 1 crore, only in the case of individual, HUF and firm. No LLP. अगर उन्होंने पहले कभी 44AD लिया, 44AD लिया और फिर उसने ऑप्ट आउट किया तो 5 साल तक ऑडिट कराना पड़ेगा। मान लीजिए असेसमेंट ईयर 2021 में उसका प्रॉफिट था 20%, उसने 44AD ले लिया। 21-22 असेसमेंट ईयर में उसने कहा जी मेरा प्रॉफिट आ रहा है 4%, तो मैं 44AD नहीं लेता, तो आपको जी ऑडिट करा दो एबीई में, 44 एबीई में करा लो, क्योंकि आप 4% ही दिखा रहे हो। फिर वो 22-20 में आया, उसने कहा जी मेरा जो प्रॉफिट है अब मेरा 18% है, 44AD दे दो, आपको ये नो ऑडिट करा। फिर चाहे जितना मर्जी परसेंटेज हो, 5 साल तक ऑडिट कराना। दिस इज द लॉ इज देयर फॉर द स्मॉलर एसएससीज। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट प्लीज? Sandeep ji, a question है, when turnover is more than 1 crore but less than 10 crore and cash receipt payment are more than 5% cash, in such case whether clause, which clause is protected? Proviso? No proviso. सर वो प्रोविजो अगर आप लैंग्वेज पढ़े तो उस प्रोविजो तो कहता है कि इस केस में आप ऑडिट नहीं करोगे। प्रोविजो की वजह से ऑडिट नहीं होता, प्रोविजो की वजह से ऑडिट नहीं होता। इन दैट केस ऑलवेज 44 ABA। नवीन जी, क्वेश्चन 5 continuous years can be broken। हाँ, अगर आपकी बिजनेस इनकम है ही नहीं तो आपको 44 आपको ऑडिट कराना ही नहीं। शिवमुद्रा जी का 44AD ऑप्शनल मैंडेटरी? इट इज ऑप्शनल सर, नो वेयर इट सेज दैट कि मैंडेटरी, राइट। चलिए, लेट अस गो फर्दर। अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। ये जो हम प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का टैक्स ऑडिट करते हैं, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का टैक्स ऑडिट करते हैं, तो इस केस के अंदर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस को भी ऑडिट होता है जब हम उसका टैक्स ऑडिट करते हैं। द क्वेश्चन इज अबाउट टैक्स ऑडिट। तो क्या इनका भी हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नवीन जी कहते हैं नो। रमेश जी करते हैं क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टैक्स ऑडिट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं क्या? पल्लवी जी का भी कहना है नो, भारती जी का भी कहना है नो। रमेश वर्मा जी का कहना है यस करते हैं। अंकित पाड़िया जी का भी कहना है यस। अनूप जी संगाई जी का भी कहना है यस। नमस्ते अनूप जी। नमस्ते सर। यस बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। वही वाली बातें हम शायद करते नहीं है पर हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट प्राइमरी है, होता ही होता है। प्लीज वी डू, हम करते हैं, राइट, सो इट इज डन। अच्छा, ये प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप जब होती है तो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनाने की जिम्मेवारी किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बनाने की जिम्मेवारी किसकी? एसएससी। अंकित जी सभी का कहना है। भारती जी इसमें क्या, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो इनके नोट्स टू अकाउंट्स भी बनते हैं, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के नोट्स टू अकाउंट भी बनते हैं। यस, रमेश जी, भारती जी, पल्लवी जी, नरेंद्र जी सभी कह रहे हैं यस। अंकित जी, ये नोट्स टू अकाउंट्स की बनाने की जिम्मेवारी भी किसकी? एसएससी की। हाँ, एसएससी की। यस, तो ये नोट्स टू अकाउंट्स में हम ये लिखते हैं, बेसिकली ये लिखा जाता है कि द एसएससी इज फॉलोइंग accrual system of accounting and fixed assets are stated at cost, depreciation as per income tax, inventories are stated। इसके अलावा भी कुछ क्या लिखते हैं क्या उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में? इसके अलावा भी कुछ लिखा जाता है कि नोट्स टू अकाउंट्स में? AS 18 संदीप जी का कहना है। अच्छा, ये लिखा जाता है डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। यस, नवीन जी, अंकित जी, पिंकी जी सभी कह रहे हैं यस। भारती जी कहती हैं वी मेंशन इन आवर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। ओके, टैक्स रिपोर्ट। अच्छा, जब ये लिखा जाता है, जब ये लिखा जाता है तो क्या हम अपने ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करते हैं कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर? नो। क्यों अंकित जी, भारती जी क्यों नो? जबकि एसएससी खुद कह रहा है मेरे डेटर का पता नहीं, मेरे क्रेडिटर का पता नहीं, मेरे लोन्स एंड एडवांसेस का पता नहीं। ऑडिटर कैसे कह सकता है कि उसको पता नहीं, मुझे पता सब कुछ ट्रू एंड फेयर है? वो खुद कह रहा है कि मैं डेटर्स बता रखे हैं 2 करोड़ के, हो सकता है 1 लाख, हो सकता है 5 लाख, आई डोंट नो। ही इज नेगेटिव अबाउट हिमसेल्फ, हाउ कैन आई बी पॉजिटिव अबाउट हिम? और अगर ऑडिट रिपोर्ट में हमने लिख दिया भारती जी, तो मैं वो अमिताभ बच्चन, वो शोले वाला अमिताभ बच्चन हो गया, उसका ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, लेकिन आदमी अच्छा है। ऐसे थोड़ी हो सकता है। वन परवेजिव, हम जब कहते हैं बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है तो आदमी कैसे ठीक है? देन आई हैव टू मेंशन इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। assessee has to be positive about himself. I have to check, I have to doubt, then I have to come to a conclusion whether they are stated at the amount at which they are realizable or payable or not. In fact, it should be written in the notes to the accounts. The assessee should write, given as affirmation, debtors, loans and advances are stated at the amount at which they are realizable, trade papers are stated at the amount at which they are payable. I'll have to check it as per my standards on auditing. I have to doubt and then tell him, okay, what you are saying is correct or not. But when he himself is saying कि मेरा ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, तो मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं बचा ना, मेरे को तो कहना ही पड़ेगा। वो खुद कह रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर। अच्छा, ये जो
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप के, इनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी? नवीन सिंगल जी का कहना है नो, पल्लवी जी का भी कहना है नो, एसके जी का कहना है यस, शिव मुंद्रा जी का भी कहना है यस, धन प्रकाश जी का भी, अग्रवाल जी का भी कहना है यस। आदेश जैन जी का भी कहना है यस। मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कह रहा हूं महेश्वरी जी, आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, whether accounting standards are applicable or not, whether accounting standards are applicable or not, यहाँ पर हूं मैं अभी। So the answer is of course yes, these are mandatory. Auditor will have to ensure that the financial statements which are prepared by the assessee are complying with the accounting standards, and if it is not, then I have to give a proper reporting in my audit report. तो क्या ये प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं? Are these proprietorship partnership financial statements complying with the accounting standards? अब जिन्होंने नो कह दिया वो तो कंप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्रेडिट नो में उनको लगता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, लेकिन जो कह रहे हैं यस, उस केस के अंदर भी आर दे कंप्लाइंग? फॉर एग्जांपल, क्या करंट टैक्स का प्रोविजन कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में? कितना करंट टैक्स है, क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं? डेफर्ड टैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या वो AS10 कंप्लाई कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ओवर द यूजफुल लाइफ, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन ब्लॉक, नेट ब्लॉक, ऐसे कर रहे हैं क्या प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप? कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी कर रहा होगा। नेट ब्लॉक ना मनुष्य जी, सो नॉट कंप्लाइंग विद AS10 ना। क्या ग्रेच्युटी का प्रोविजन कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में? रमेश जी, तो AS10 इज नॉट कंप्लाइड ना। ग्रेच्युटी का प्रोविजन कर रहे हैं प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप्स में? नो। क्यों? AS15 एप्लीकेबल नहीं है, और AS15 तो सेकेंडरी है। इससे पहले मैं ट्रू एंड फेयर व्यू कह रहा हूं, अप्रूवल सिस्टम है तो ग्रेच्युटी प्रोवाइड करना जरूरी है। हाउ कैन वी से इट इज ट्रू एंड फेयर देन? How can we say it is true and fair? Please see, for example, giving gratuity, it is not income tax will give my clues to how to prepare a financial statement. It is my general accounting principles. Accrual system means accrual. अगर पहला साल भी है तब भी ग्रेच्युटी, अगर कंपनी है तो भी उसको एक्चुअल कराना मैंडेटरी है। इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप LLPs, अगर 50 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं, फर्स्ट ईयर है प्रोप्राइटरशिप का, और उसको पता है कि 10 से ऊपर क्रॉस करेंगे तो फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा। कंपनी है उस केस के अंदर भी, इट इज नॉट दैट आफ्टर 5 इयर्स आज सर्विस दे रहा है तो उसके बेस के ऊपर 5 साल के बाद ग्रेच्युटी लगेगी, तो अक्रूवल के बेस पे आज होता है। और प्लीज अगर ये कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आई हैव टू अप्रोप्रिएटली क्वालिफाई माय ऑडिट रिपोर्ट। आई हैव नो ऑप्शन। I have no option, please. And then if I talk about where to, if not compliance, where to report such non-compliance. So we'll be talking about where to report such non-compliance in my next few slides. Let us understand for the applicability of accounting standards. Now, with effect from 1st April 2020, now we have got 4 levels. Level 1, 2, 3, 4, large, medium, small, and micro. More than 250 crores, then it is large. As good as then other than SMC for companies. These are SMCs.
as per the company's accounting standard rules. But 50 to 250 crore medium, 10 to 50 crore small, and less than 10 crore micro, and borrowing limits are also there. And in case you are auditing an assessee who is a medium, small or micro, that is level 2, 3 or 4, then ensure that in the notes to accounts this paragraph is mentioned. जो applicable है level वो लिखेगा, बाकी काट दीजिएगा. This is again mandatory. नहीं कर रहा तो आपको qualify करना ही पड़ेगा. Right? And of course, for proprietorship, partnership, LLPs, I suppose you all are complying with these formats. Your own institute has notified these formats. आप सब लोगों ने किए ही होंगे. कोई क्वेश्चन इसमें? किए हैं सबने ये फॉर्मेट्स प्लीज? Have you followed this format? एसके सर कह रहे हैं यस. बाकी सबने भी इंश्योर किया है कि in some cases yes, some cases no. इरफान मलिक जी कह रहे हैं नो, इट्स ऑप्शनल. इरफान जी, आप अपने घर में कोई रूल बनाते हैं, आपके इंस्टीट्यूट ने किया है ना, आपने इसके इंस्टीट्यूट ने किया, फिर आप कहते हो जी मैंने घर में रूल बनाया, मैं खुद ही कहता हूँ ऑप्शनल है, मैंडेटरी है. दूसरे तो चाहते हैं कि मैं अपने ऊपर विश्वास ना करूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं अपने ऊपर विश्वास ना करूं. प्लीज थिंक अगेन. वी आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट. सर वही है ना कि दूसरे तो यही चाहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपने ऊपर विश्वास ना करें, वो कोई भी रूल खुद घर में बनाए और खुद ही उसको देखें कि मैंडेटरी है, ऑप्शनल है. वो तो चाहते ही हैं, वो कहते हैं कि हमारे में और सीएस में डिफरेंस क्या है, जो सीएस कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं, और सीएस भी कहते हैं इसको सही कह रहे हैं, हमारे में कोई डिफरेंस ही नहीं है. आप खुद देखिए, आपके इंस्टीट्यूट ने बनाया तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस. एंड ऑफ कोर्स ये प्रीवियस ईयर फिगर्स देना तो पिछले 20-25 साल से मैंडेटरी है. इट इज मैंडेटरी. तो दे रहे होंगे ना फिर आप, क्योंकि मैंडेटरी आप करते हैं, ऑप्शनल करते नहीं, तो मैंडेटरी तो पिछले 20-25 साल से दे रहे हैं ना सबके सब. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, सबके सब कर ही रहे हैं ना, कि जब मैंडेटरी होगा तब करेंगे, तो वो तो मैंडेटरी है तो कर ही रहे हैं ना अपन. किसी चीज में हम मैंडेटरी ऑप्शनल में चले जाते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से. जस्ट थिंक अगेन. These are previous year figures are already mandatory. Accounting standards are already mandatory. These formats have been prepared so that there is no non-compliance. We want standardization, compliances, improvement in the financial formats reporting throughout the country. इसकी Excel sheets है, Excel sheets है already, which is made available on the ASB website, asb.icai.in. Please download from there and prepare. आपके accounting standards, आपके frameworks, आपके current non current सारी की सारी compliances हो जाएंगी. Please follow this. Right? ये Schedule 3 के ऊपर based है. ये इनकम एक्सपेंडिचर एंड इवन फॉर ट्रस्ट्स एंड सोसाइटीज. ये प्रीवियस ईयर फिगर देना तो मैंडेटरी, मैंने आपको बताया है ना, है 20-25 साल से. अगेन based something upon schedule 3, then taken whatever there is nationally and internationally. एक यहाँ पे restricted और unrestricted funds हैं. अगर आपके restricted funds नहीं है NPOs में तो उसको हटा दीजिए पूरी लाइन आइटम. कोई एक आइटम नहीं है, मान लीजिए आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज नहीं है, पूरी लाइन आइटम हटा दीजिए ना. इसकी भी एक्सेल शीट्स हैं. प्लीज फॉलो दिस. इनकम एक्सपेंडिचर अगेन, अगर आपके रिस्ट्रिक्टेड फंड्स नहीं है तो पूरे कॉलम हटा दीजिए. अगेन रिपीटिंग, प्रीवियस ईयर फिगर्स देना तो 2500 साल से मैंडेटरी है. राइट? सो स्टैंडर्डाइजेशन होगा. जैसे मैं यहाँ पे कहूँ, मैंने अमाउंट सेट अपार्ट किया 11(2) के अंदर, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा.
फिर मैंने अगले साल खर्चा किया तो खर्चे यहाँ पे आ जाएंगे, मैंने फंड से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, बैलेंस टू रेवेन्यू रिजर्व, स्टैंडर्डाइजेशन, इंप्रूवमेंट इन द फॉर्मेट्स. प्लीज ट्राई एंड फॉलो दिस. अच्छा, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन. इन द केस ऑफ मेनली आई वुड से प्रोप्राइटरशिप, मान लीजिए उनको जीएसटी की पेनल्टी देनी पड़ी या फिर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, तो क्या वो सीधा कर सकते हैं डेबिट क्रेडिट टू द कैपिटल अकाउंट कि भाई मेरे को प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैं सीधा उसमें कर दूं, क्या फर्क पड़ा, क्योंकि मेरे को सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट से लूंगा और विदाउट एनी एडजस्टमेंट उसी पे टैक्स दे दूंगा. तो जो मेरे को अलाउबल नहीं है, मेरा पेनल्टीज हो गई या डिफरेंट सच टाइप ऑफ आइटम्स विच आई कैन टेक डायरेक्टली टू द कैपिटल अकाउंट, ऐसा कर सकता हूँ क्या? अनिरुद्ध जी, अगर हाँ, बिल्कुल assessee is required, उसकी responsibility to prepare accounts. I have to guide him. If he do not and he does not comply with the previous year figures or the accounting standards, I'll have to just report in audit report. No, nothing more than that. बताना तो मुझे पड़ेगा, नहीं करता तो yes, I'll have to report in audit report. That's all. Mine is audit report only. Agreed. So can these GST penalties or saving bank interest, instead of taking to profit loss, I take direct to capital account, allowed or not? Can I take it or not? जीएसटी की पेनल्टी है या इनकम टैक्स का इंटरेस्ट है या मेरा सेविंग बैंक का मैंने डाल रखा है उसका इंटरेस्ट है, मैंने बुक्स के अंदर दिखा रखी है इमोवल प्रॉपर्टी, उसका रेंट आ रहा है, उसको मैं सीधा कैपिटल अकाउंट में ले जाऊं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Waiting for your responses, please. No. पर ले जाते तो हैं शायद. No, should not go to capital account. लोचन जी भी, धन प्रकाश जी, हर्ष जी भी, बट ले जाते हैं काफी लोग. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं ले जा सकते. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल. और जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करते हैं ऑफ द बिजनेस, अभी कई लोग क्या करते हैं कि उनके पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज को भी बिजनेस की बुक्स में ले आते हैं. Please, my PPE should contain only my business assets. It should not contain my other business assets. बिजनेस का ऑडिट करता हूं, इसीलिए जब मैं चैप्टर 6A की डिडक्शन का 3CD में सर्टिफिकेट देता हूं तो उसी का देता हूं जो कि जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मैं ऑडिट कर रहा हूं. If it is not there in my books of accounts of the business, I cannot and should not report. That's why if I go to the income tax return where my total income is more than 50 lakhs, there they say in my schedule AL, assets and liabilities, you give the details of those assets which are other than disclosed in your business balance sheet profit loss. And if those balance sheet profit loss, they are containing the personal assets which are not related to business, give an appropriate disclosure in your audit report, please. Differentiate. और होता क्या है कि a few times we put those penalties in the capital account, and in 3CD when they ask any amount of penalty not debited to profit loss, तो मैं capital account का amount लेके वो 3CD में डालता हूँ, तो
जो सीपीसी है वो डबल एडिशन कर देता है। एनी इनकम अदर इनकम 16D में नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट लॉस, वो जो सेविंग में मैंने कैपिटल अकाउंट में दिया था वो दोबारा दे देता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में तो क्रेडिट किया नहीं, तो सीपीसी उसकी एडिशन कर देता है। So I have to be very, very careful at because preparation of the financial statements and audit is forming the basis for the tax audit as well as my income tax return. So I have to be very careful in preparing, right? Now, ये proprietorship partnership में क्या मैं list of trade receivables, list of trade payables, unsecured loan, इनकी भी list देता हूँ क्या? इनकी लिस्ट देता हूं क्या? कंपनीज में तो नहीं देता, पर प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में देता हूं क्या? यस, पीके जी कह रहे हैं यस, रमेश वर्मा जी भी कह रहे हैं यस, राजीव कुमार जैन जी कह रहे हैं नो, हर्ष जी कह रहे हैं नो। माय ओनली पॉइंट टू ब्रिंग आउट हियर इज देयर इज नो लॉ इनटू दिस, नो लॉ इनटू दिस, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इट डिपेंड्स अपॉन यू। पीके जी, नरेंद्र जी, it depends upon you. It is not mandatory to give those lists. In companies, we don't give. So it is optional. It depends upon how much responsibility you are ready to take upon yourself. If you decide not to give, there will be perfectly fine, no issues. If you want to give, give. But if you are not giving, please ensure कि आप बैलेंस शीट में से एज पर एनेक्चर भी हटा दें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो लिस्ट जितने भी है सब असेसिस तो वैसे भी आपने साइन करा के अपने पास रखनी है एज एन ऑडिट प्रोसीजर, आपने साइन करा के अपने पास रखनी है। बट डोंट गिव, इफ यू डिसाइड नॉट टू गिव, नीड नॉट गिव। वी आर नॉट गिविंग इन द केस ऑफ कंपनीज, आप भी नहीं दे रहे, और आईटीआर में डिटेल्स भी नहीं मांगता है, right? So choice is yours. And of course, notes to accounts में be careful to give all the accounting policies which are significant to that assessee. अगर foreign exchange के transactions हैं तो वो भी जाएंगी, borrowing है, borrowing तो होती है, loans लेते ही हैं, तो उसकी भी disclosures जो AS 16 के हिसाब से वो जाएंगी। कई लोग ICDS की डाल देते हैं, ICDS की disclosure notes में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। It is only in clause 13E of my tax audit report 3CD. Nowhere else. Every standard clearly says that it is not for the purpose of your books of accounts. It is only to compute the income. And also, I would say the MSMED Act, which is one of the laws which is overriding all other laws in the country, says notwithstanding any other law in the country, every financial statement shall declare 18 से 22 के अंदर 22 में आते हैं, तो वो डिक्लेरेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में नॉन कॉर्पोरेट्स में भी देनी है, उसमें भी देनी है। राइट, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस पॉइंट? सुनील शर्मा जी का क्वेश्चन है, accounting treatment of free trip to foreign destination dealers meet of company by a dealer and TDS done by company in the name of person traveling and credit note given to the dealer. How to report in accounts and whether it finds remark in 3CD for clause relating to section 28. It would come 2 points. First of all, it is an income under section 28(4) because tax has been deducted under section 194R. So if it is accounted for in the books of accounts, then how you will account कि जितने अमाउंट पे TDS कटा उसके ग्रॉस अमाउंट को आप इनकम दिखाएंगे और रिलेटेड को एक्सपेंडिचर दिखाएंगे और कंप्यूटेशन में डिसअलाउ करेंगे। कंप्यूटेशन में डिसअलाउ इसलिए करेंगे क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं था, क्योंकि अगर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता तो 194R में TDS नहीं कटता। अगर बुक्स के ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं कर रखी और TDS है तो आप 16D कॉलम है जो मेरे आगे की स्लाइड्स में भी है, वहां पर यू विल हैव टू रिपोर्ट हाउ टू रिपोर्ट। तो इन 16D यू विल रिपोर्ट। क्लॉज 44 जोशी जी आई एम टेकिंग आफ्टर 1 or 2 स्लाइड्स, राइट? तो ये 16D में आपको दिखाना पड़ेगा, राइट? सुनील,
अगर बुक्स में आपने प्रॉफिट लॉस में एंट्री नहीं की है, तो कर ली है तो आप एक्सपेंडिचर दिखा के उसको डिसअलाउ करेंगे, बिकॉज दैट इज पर्सनल इन नेचर. Coming into this, another important aspect of 44AB. When I issue 44AB, I issue two types of report, 3CB or 3CA. And if I say 3CD के 44 clauses में से एक clause है clause 8. In that clause 8, I have to choose, when I'm issuing form 3CB along with 3CD, I have to issue which clause, then I issue any of these 5 clauses, A, B, C, D, E. पांचों में से एक clause. But when I issue 3CA, I write third provision to section 44AB. Why? Because section 44AB says that if that assessee is covered under any of these 5 clauses, then it has to get done 2 things. First, books of accounts audit. You have to get books of accounts audited. Second, obtain the particulars. 2 things. First provision and second provision says in what cases 44ADB the limits will not be considered. Third provision says if these books of accounts are audited under any other law, then only give the particulars. So audit of the books of accounts is primary, either under any other law, if not then under income tax. And that's why when some certain other professionals, advocates, company secretaries, cost accountants, and ITPs, they say, okay, we also know income tax, we can file these 44 clauses. Your institute has been saying, no, it is not about these 44 clauses, it is audit of books of accounts, and for which AS and SAS both are applicable. And no other institute, no other curriculum makes the students learn both these AS and SAS. That's why it is still retained with the chartered accountants. Please improve upon this AS and SAS if you want to retain the tax audit with the chartered accountants. Please improve, and please improve the financial reporting. And if I talk about audit, because audit is the primary for the tax audit, and we have been always concentrating on these 44 clauses. Of course, these 44 clauses are very, very important, being particulars, but financial statements are primary. I'll not go into theory into audit, just 3 slides on that. First of all, I should know how to issue an audit report. And normally we issue an unmodified report, which is a clean report. But there is a modified report too. And if I talk about modified report, these are of 3 types, which is my qualified, adverse, or disclaimer. When to issue what, we should know, and this is applicable for all audits, whether it is company, LLP, proprietorship, partnership, tax audit, whatever audit, societies audit, whatever audit. And here, if I talk about, you have to just remember your judgment on pervasiveness of the matter. Material but not pervasive, material and pervasive. It is material but not pervasive, then it is a qualified. Material and pervasive, then adverse and disclaimer or disclaimer. So financial statements, they are materially misstated. Suppose in the case of proprietorship, partnership, company, or LLP, there is a debtor which is struck off, and the assessee is still showing it as 1 receivable, 2 crore receivable, 50 lakh receivable. It is material, but not perceivable, because it is affecting only one debtor. My whole asset size only one. So in that case, I'll say subject to that, it is true and fair. Just giving an example. But in this case, where I say my debtors, creditors, loans and advances, everything is not confirmed, I don't know anything about that, then I have to say it does not represent true and fair view. This is adverse. For all this, my SA 705 reporting is there, format वहां दे रखे हैं. In second row item, it is not about material misstatement, but about audit evidence that unable to obtain audit evidence sufficient appropriate. Example of this case.
Suppose your client has purchased a machinery, which is material. Payment has been made through NEFT, but he has not given you any invoice, any installation, not visited, and you're not given any document. So that evidence is not there with you. So you have to write subject to that is true and fair. Evidence nahi diya. And this case, very important. Suppose there is a fire at the assessor's premises, all records are burnt, there is a flood, there is an earthquake, or the documents are all seized by various enforcement agencies, ED, CBI, GST, anyone. And you don't have those evidences when you audit. So in that case, because you don't have any audit evidence, you cannot say just based upon the books of accounts that it is true and fair. You have not verified those evidences. There you have to mention that we do not express an opinion. We cannot express an opinion whether it is true and fair or not. Very, very important, please. In every case, it is not true and fair. Right? Any question up to this point? Donations, Shweta ji, donations are not required to be mentioned. But yes, it can be mentioned under section 37 others. When you say that these are not for my business expenditures, it is not a penalty. It is only others. Sunil Sharma ji question, continuation to query relating to 194R in business perquisite. TDS is the name of person availing trip, say partner. It is in his 26 AS. Dealer has not incurred a single penny of expense. Of course, dealer has not incurred. That's why it is an income. I can credit profit loss with the value of trip informed to me by company, but there is no expense by firm to show. Of course, that expense has been intangible, being a perquisite. So you'll debit that to partner. So expense will be booked. The partner availing will have to report in his income, otherwise he will receive notice for mismatch in ITR. Here, now it is in the case of that individual, though the person who has given it, in that case, he should have deducted in the name of the partnership firm. But when he is deducted in the name of partner, the recourse here would be no, because that partner would not be subject to the tax audit. So in his income tax return, he has to show that as an business income under section 28. He'll have to show there. In clause 21 for, no, there is a clause in 21 for any deduction not allowable under section 37. So in 37, there is others. So there I have to show. Otherwise, I don't. No, in 3CD, it is not there. In 3CD, it is not there. So in 3CD, you need not show. But in ITR, when you are filling for disallowability under section 37, fill it others. Right? Now, going with the 3CA, 3CB, which are my audit reports, 3CA contains 3 paragraphs, and any of your observation which relation to 3CD has to be given in para 3. If I talk about 3CB, then there are 5 paras. And where to report those qualifications, it is para 3A related to financial statements. A has not complied, previous year figures not given, not true and fair, or subject to that it is true and fair. Whatever views you have to give observations. For the financial statements, given 3A, and for 3CD, give in para 5. They are 2 separate. If you read 3CB, these 2 paras, you will automatically understand that. And whether you are incorporating SS 700 in your 3CB, 3CA, क्या SS 700 incorporate कर रहे हैं अपने 3CA, 3CB में? Yes. चलिए, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नवीन जी, आपको क्वेश्चन अभी लेता हूँ।
So SA 700, I suppose, I don't think that you are using that in your 3CB or 3CA. I am just showing what you should mention and you take a call. Otherwise, what you are giving is that you are taking the full responsibility on yourself. If you talk about para 3CB, para 3A, what we mention, it is given in our tax audit guidance note also. The assessee responsibility, what is his responsibility? We write in our report that the assessee is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statement, and which is in accordance with the accounting standard issued by ICAI. So I write in my report, and I also write what is my responsibility, tax auditor's responsibility. Our objective is to obtain reasonable assurance, not absolute. If I'm not writing, I'm saying everything is absolute assurance. That whether the financial statement as a whole are free from material misstatement due to fraud or error. Reasonable assurance is a high level of assurance, but not a guarantee. That an audit which is done in accordance with my essays will always detect a material misstatement when it exists. मैं ये अपनी रिपोर्ट में खुद लिख रहा हूँ, जो कि मेरी कंपनीज की ऑडिटर्स रिपोर्ट में होता है. You take a call. When you are doing for proprietorship partnership, you want to take an absolute responsibility, or you want to retain it to be reasonable assurance. So put that into your, आपने एक में करना है 3CB में, सब में हो जाएगा. Again, these paragraphs taken from and amended from SA 700. In 3CB para 5 related to 3CD or 3CA para 3, we write assessee is responsible for the particulars. In 3CB, 3CD, हम 3CD पे इसीलिए SSC के साइन कराते हैं. Given in our guidance note, and our responsibility is to verify these, and that we have conducted as per the guidance note issued by ICAI. लिखिए अपनी रिपोर्ट में. Choice is yours again. How much responsibility you want to take? Your institute has given this as a guidance note, and of course, guidance note is mandatory in nature. If you have reason to deviate from it, you say, no, I want to take full responsibility, so I'm not mentioning. Choice is yours. Going to clause 44. Two clauses were enabled. It was there since 2018, but enabled since last year. One is 30C, second is clause 44. And it talks about the breakup. They are asking you for the breakup of total expenditure on entities registered or not registered under GST. So basically, I'll say under two heads it is 1 and 2. One is for entities registered under GST. Second is entities not registered under GST. Any expenditure related to that. So if I take 1, so it talks about 3 items, because 3 plus 4 plus 5 is equal to 6. So it says in relation to goods or services exempt under from GST. Now, for example, petrol, diesel, electricity, because from whom you are purchasing, they are all registered under GST, but these are exempt from GST. So put all here. In this, invoice does not contain GST. In this case, composite dealers, again, the GST is not separately charged under the invoice from the composite scheme. The third case where GST is separately charged. Mention all these total out here. And these are for the entities which are not registered in the GST. Now suppose you're all imports, your advocates, these are not registered, all reverse charge. And of course, if I talk about, you have to give out expenditures, not allowances, like depreciation, bad debts. These are all allowances. These are not your expenditures. And of course, it has to be on entities and capital expenditure also. So item wise, you need not give. Head wise, you need not give. Aggregate, either all in one or in 2 lines. Our guidance note says 2 lines. One is for revenue expenditure, second is for capital expenditure. And then it is on entities. Entities has nowhere been defined. But say salaries, payment made to them, are they entities? Because entity is not defined, but entities means something commercial nature of activities they do.
So entities are salaries are not entities, so not to be covered out here, right? And of course, 3 plus 4 plus 5 is equal to 6, but 6 plus 7 may not be equal to 2. May not be equal to 2. So don't try to reconcile. And here, there could be expenditures which are prepaid, prior period, or partners plus partner. These are again not entities. So need not be given. Now what to do? Here, because this information is to be given by the assessee, tell him to give. Tell him to give. You test check it on the basis from your books of accounts as well as the returns filed with the GST. Now there could be a case you are doing an audit of an advocate. He's not registered in the GST, but still this clause is required because what amount he has spent on the GST registered entities. It is nothing. It is not about input credit taken or not taken. Now here give the details, but if the assessee has not maintained his books of accounts in such a manner which clearly gives this, then give your disclaimer in your 3CB or 3CA, para 5 of 3CB or para 3 of 3CA, but give the details out here. Not giving of the details because these details have to be given by the assessee. यहाँ पे detail दीजिए और 3CB 3CA में अपना disclaimer दीजिए कि yes, though we have test check, but we cannot say whether the details given are true or correct or not, because the assessee has not maintained his expenditure in such a way in his books of accounts. Non-giving of the details, I don't say we should give. We should give. Right? Any questions on this, please? In case of RCM, transport is registered. So in that case, whether it is exempt, then it has to be. He's not charging that GST, na. So or registered as GST, में तो column number 3 में आ जाएगा. Right? Chali. Then there is a difference between 3CD notified and the schema. We have to go as per the notified 3CD. Classical example is 27A, where the notified schema talks about SENVET and schema talk about input GST credit. GST basically, I would say, ITC. So a conscious call taken that you have to take the notified form and not the schema. So we are not giving. Your guidance note says not to give. It's not to give out here. Because Institute has already recommended in 2018 when this amendment was made, they have amended 2 times. But Institute have told them, but they have thought it prudent, CBDT has thought it prudent not to take the detail. Because had the CBDT thought that it should be amended, they would have amended, but they have not amended consciously, maybe, we don't know. Because had they intended, they would have amended the 3CD, na? They 2 times they have amended it, but they have not amended. You cannot do anything through the schema, right? And hard copy versus uploaded copy, always we have been saying, and the guidance note has been saying clearly now, last year also, this year also, that it is not only the uploaded soft copy, you have to issue the hard copy. हार्ड कॉपी आप इशू करेंगे, उसके बेस के ऊपर आप 3CD को जो अपलोड करेंगे सॉफ्टवेयर में, उसकी डाटा से अपलोड करेंगे. हो सकता है कि आप जब वहां अपलोड कर रहे हैं उसमें कोई एरर हो सकता है, बट व्हाट इज गिवन इन हार्ड कॉपी इज द फाइनल. जब आपका क्लाइंट का असेसी का स्क्रूटनी केस लगे, सो इन दैट केस यू हैव टू गिव दैट हार्ड कॉपी ओनली. This is That's why hard copy is to be issued mandatory. This is given in your own guidance note. Then again, 194R I talked about in case of 3CD. अभी जो सर ने केस पूछा था, उस केस के अंदर उसका टैक्स ऑडिट ही नहीं हो रहा था, तो सीधा ITR में दिखाएगा. बट जहां पर बुक्स में एंट्री नहीं है और वो फर्म का TDS कटता और बुक्स में नहीं एंट्री दिखाई थी, then in that case you have to report in 16D.
और ऐसे ही contingent liability, because these errors came through CPC since last 2-3 years. वो क्या होता है कि 21 क्लॉज में कहता है नहीं कंटीजेंट लायबिलिटी और गाइडेंस नोट में दे रखा है व्हिच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस. हमने क्या किया, हमने नोट्स जो अकाउंट्स उठाए जहां पर कंटीजेंट लायबिलिटी का अमाउंट दे रखा था वो हमने वहां पे डाल दिया. गाइडेंस नोट में क्लियरली लिखा है कि इट हैज टू बी ओनली व्हिच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस. नाउ कंटीजेंट लायबिलिटी पर से कैन नॉट बी डेबिटेड टू प्रॉफिट लॉस. इट इज ओनली द प्रोविजन. इफ इट इज डेबिटेड देन the form rightly asked कि अगर contingent liability को debit किया allowable है ही नहीं, if you report then it has to be added back. You have to check it and report back. Another questions where the double additions were there in place of clause 21 and clause 26. Clause 21 for 40A7 and 43B for clause 26. Now gratuity for in relation to gratuity, and these two are different. If I talk about 40A7, it talks about provision for gratuity, and provision for gratuity is not allowable under Income Tax Act. So you have to report under this clause 21. 40A7 excludes the approved gratuity fund. And if those approved gratuity funds you are making contribution, it is out of 40A7, it is allowable, but on the payment basis. And if that amount is not paid by the due date of filing of ITR, then it's to report under 43B for the gratuity fund. There is a difference. So कौन सा कहां पे देना, I should know. And in case of 30C, of course, GAR, assessing officer tells, how can the chartered accountant tell? Because he should have all those agreements with the other parties which he have. अगर वो other parties वाले भी सारे agreement हमारे को देते हैं, उन्होंने कैसे accounting की है, then only I can give. Otherwise, my guidance note says that you give this disclaimer clear cut. I suppose you have put it last year itself. You have not put it this year. Right? And then experts panel, already told by Pallavi that you can sign up here. And after signing up, you'll get an email. You just click on the link, your account would activate. It is all free of cost. Then you can ask a question on GST, income tax, company law, RBI, FEMA. Answer will come to your email. Also, you can click here. The answer would be below that. Or you can just search here. You can see that your question which you want is already answered. And you can have various articles, presentations, videos, notifications, category wise. You want to see only income tax, click to articles, and then income tax, only income tax articles would be coming. More than 35,000 already answers already given by various experts out there. Various experts out there. Anyone can use it, is free of cost. And of course, this presentation I'll upload today on this portal. Anyone can download from here. And also the free mobile app is there. Just my notifications, that's in 2007. And thank you for giving me an opportunity to share. I am available on the Twitter and other links. Anyone can join me. Now I am taking the questions which are there in the chat box. Nitin ji, a question at turnover is 7.5 crores. Cash receipt and payments are below 5%. So tax audit is not required. But then is it compulsory to show at least 6%? Nitin ji, maybe you have joined late. Whatever is the actual, you please show above 2 crore, you need not see the percentage of profit. Sunil Sharma ji, a question hai, any person eligible for exemption 1026 and having turnover of 50 crores in the scheduled region is not required to file ITR as it is out of purview of total income. ITR filed for claiming refund requires audit under 44AB. Such persons don't have to be audited. Portal not allowing filing of ITR to claim refund. Earlier it also proportionate refund to exempt income shown. Can tax audit apply to persons whose income doesn't require bifurcation under 5 heads? No, a tax audit is required only if it's a business income. If there is no business income, there is no requirement. Meshji, question, can CA without giving any figure as the SSC is not in a position to provide the same will be okay? For clause 44 total disclaimer. Sir, कैसे नहीं total figure होगी? उसका GST रिटर्न जाती है तो आपको उसको GST से भी मिल जाएगा. बैलेंस शीट आप ऑडिट कर रहे हैं, डिटेल्स तो होंगी ना.
सर एनकर देखिए सर, अगर आप बहुत ज्यादा डिस्क्लेमर्स देंगे तो सरकार का कहना, जब आप डिटेल्स कर ही नहीं पा रहे हैं तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, फिर हर चीज में डिस्क्लेमर दो, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो जरूरत क्या है, हटा देते हैं। So that's why not reliable. That's why I'm saying, Meshri ji, you give your disclaimer in 3CB, right? Transporter is registered under GST and declaring under RCM. It should be on the registered expense because GST department contended it is one of the departmental audits. So that's why Naveen ji, I'm saying कि अगर वो GST में registered है, but आपका उसके अंदर वो exempt supply में आ जाता है because RCM की वजह से, और आपके इनवॉइस में सेपरेटली GST चार्ज नहीं है, तो आपके कॉलम 3 में आ जाएगा। बुद्धा साहब बनर्जी का क्वेश्चन है, एज पर द गाइडेंस नोट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनेशन वेदर टैक्स रेट एप्लीकेबल और नॉट इन द केस ऑफ डेरिवेटिव्स option trading, total favorable and unfavorable is to be taken. My query is whether the same turnover required to mention in the clause 40 turnover and gross profit and net profit. Please see, it is clause 40 is required only in the case of my manufacturing or trading of activities, not in the case of manufacturing or trading of goods. So in that case, these are not goods. So वहां पर आपको clause 40 applicable नहीं होगा। हेलो। यस सर। हाँ, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन। और इफ देयर इज एनी मोर क्वेश्चन, participant are requested to unmute and ask. Ayush Goyal ji is also there. अच्छा, चैट बॉक्स में आया है। रश्मि जी, कहना है, my client is into trading of goods and services. The client is not able to do verification between unregistered and composite dealers. आप in that case you see ना कि उसने कितना इनपुट लिया है। वो जीएसटी जो करते हैं वो ज्यादा बेटर बता पाएंगे। वो कहते हैं कि सारी डिटेल तो जीएसटी पोर्टल से मिल जाती है। आप देखिएगा एक बार। Sir, I have a small question. So बोलिए in प्लीज। case of section 41(1), cessation of trading liability, is it supposed to be reported in the tax audit report in case it has already been credited in the profit and loss account? Because in case of reporting, what happens is the new portal is adding it back in the computation at the time of proposed demand. इसका तरीका क्या है नवीन जी? इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है basically that you have shown in the profit loss. So in your income tax computation, you first reduce it, you first add it back and then claim as a deduction in the ITR. And specifically in the ITR, there is another line item under section 41. So that way it will allow. You need not change your profit loss for that or reporting in 3GD for the same. Any other question? मैं कोई मिस कर रहा हूं तो बता दीजिए दोबारा। हेलो हाँ जी प्लीज। सर, गाइडेंस चाहिए था रिलेटिंग टू डिसेबल एसेट जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नहीं क्लियर नहीं आया, क्लियर नहीं आई आवाज। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है और डेप्रिशिएबल एसेट है, बिल्डिंग है। बड़ा पॉइंट सर। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी में डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर रहे हैं। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 5% हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं और वो बिल्डिंग सेल हुई है। सेल हुई है तो उसमें 50C अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द एसेसेबल वैल्यू एंड
सेल वैल्यू इज मोर देन 10%। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल में मैं क्या फिगर लूंगा, सेल वैल्यू लूंगा या गवर्नमेंट वैल्यूएशन वैल्यू लूंगा? और वो अगर वहां लेता हूं तो 3CD में जो सेक्शन 50C वाला डिस्क्लोजर है वो भी देना पड़ेगा मेरे को। Sir, in your books, you have to always take the figures which are actual. 50C is a dimming provision. 50C Yes, is a sir. dimming provision. So that you have हाँ. to take through your computation of income directly, not in your books of accounts. मतलब नहीं, डेप्रिसिएशन तो हम अलग से कैलकुलेट करें ना। 3CD रिपोर्ट में डेप्रिसिएशन भी है और 50C भी है, तो हम वहां मैं क्या लूं, कहां पर लूं? डेप्रिसिएशन के अंदर तो आपका जब वो एसेट बिक गया तो जितना आपका जो सेल वैल्यू लूंगा मैं। सेल वैल्यू पूरी आएगी नहीं ना सर। आप अगर चेक करेंगे तो वो उसको नील करेगा ना, नील से ऊपर तो नेगेटिव तो WDV लेता नहीं है ना वो। नहीं, नील नहीं हो रहा है सर, मेरा एसेट रह रहा है। मेरे पास 4 बिल्डिंग है, उसमें से एक बिल्डिंग सेल हुई, एक ऑफिस बिल्डिंग सेल हुई है, एसेट मेरा अच्छा। रह रहा है। 20 लाख में मेरा सेल किया, फॉर एग्जांपल मैं 20 लाख में सेल किया, तो मैंने जो सेल वैल्यू डिडक्शन 20 लाख कम कर दिया डेप्रिसिएशन शेड्यूल में, और गवर्नमेंट वैल्यूएशन 30 लाख है। तो 30 लाख है, तो डिफरेंशियल 10 लाख जो हो रहा है उसमें 50C अट्रैक्ट हो रहा है। अब मेरे पास ऑप्शन बच रहा है कि या तो मैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल में 30 ले लूं, अगर 30 नहीं लेता हूं, मैं 20 लेता हूं, तो बाकी बैलेंस 10 को मैं कैपिटल गेन में कैसे दिखाऊं और 3CD में कैसे दिखाऊं? सुमित जी हाँ जी। प्रमोद सर, आई विल टेक अप दिस क्वेश्चन। Yes, sir. तो इसमें देखिए 2 चीजें जो जैसे सर भी आपको समझा रहे हैं, जो हाँ. हमारे बुक्स में है ना, बुक्स में हम एक्चुअल 20 लाख ही लेंगे, बुक्स में 30 लाख की कोई एंट्री नहीं होनी है। ठीक तो है। जब आप डेप्रिसिएशन हाँ. भी करें, सपोज करें आपका टोटल 1 करोड़ है, तो उसमें हाँ. से 20 लाख माइनस हो जाएगा, जैसे ब्लॉक डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट, और ठीक करके है। फिर आपका 80 लाख पे आप डेप्रिसिएशन ले लोगे। हाँ, ठीक है, ठीक है ओके। ना? हाँ. अब जो डिफरेंस है जिसके ऊपर 50C अट्रैक्ट हो रहा है, सिर्फ हाँ. वो अमाउंट आपका 50C के उसमें आएगा, उसके ऊपर अकॉर्डिंगली 50C का टैक्सेबिलिटी आपको डिटरमिन करना है, बट दैट हाँ. हैज नो रेलेवेंस विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट ठीक इज अ है। डीमिंग फिक्शन, जिसका कि आपको अंडर डीमिंग फिक्शन टैक्सेशन देना है, बट अब उसके कारण आप 10 लाख रुपए से अपना सेल वैल्यू बुक्स में आप नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है सर, बुक्स में तो नहीं बढ़ा रहे हैं, डेप्रिसिएशन शेड्यूल में भी मैं 20 ले रहा हूँ, Correct. लेकिन अब ये वो डीमिंग प्रोविजन जो 10 लाख आ रहा है, आपका कहना है कि वो कैपिटल गेन में मैं लूंगा? हाँ, लेना पड़ेगा, तो बिकॉज ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल 50C। गेन अगर आप भरने जाएंगे तो वहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फिर क्या लेंगे आपको? क्योंकि देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 चीजें साइमल्टेनियसली वर्क कर रही हैं, क्योंकि Okay. आपका अदरवाइज कैपिटल गेन नहीं आ रहा है, बिकॉज ब्लॉक डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट। हाँ, ठीक है ना, एकदम एग्री, करेक्ट है ना? और हाँ. फिर भी आपको 50C का एप्लीकेबिलिटी आ रहा है, बिकॉज एक ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसफर हाँ. इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू। या तो आपको एज पर दी प्रेजेंट प्रोविजंस ऑफ ITR, आपको उसमें 50C में वो 30 लाख लेके और जो 20 लाख का आपका। हेलो लाइन कनेक्ट, आयुष जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आयुष जी आप म्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ. तो जो 30 लाख को आपको सेल कंसिडरेशन लेना होगा, Yes, sir. लेस 20 लाख जो आपने अपने बुक्स में सेल कंसिडरेशन ले लिया है, उसको हाँ. आपको फैक्टर कॉस्ट दिखाना होगा, तभी आप वो 10 लाख रुपया दिखा पाओगे। या यही मैं समझना चाह रहा था। मतलब मैं डेप्रिसिएशन शेड्यूल में नहीं लेके मैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो मैं सेल वैल्यू उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ूं, और मार्केट वैल्यू जो आ रहा है एसेसेबल वैल्यू उसको सेल वैल्यू पकड़ूं, तो वो प्रोविजन मेरा ठीक हो जाएगा। करेक्ट, तभी आप वो बैलेंस 10 लाख पे टैक्स दे पाओगे, बिकॉज 20 लाख के ऊपर हम्म। प्रोपोर्शनेट आपका टैक्सेबिलिटी बनता नहीं है। हाँ, समझ गया सर, समझ गया। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। एक प्रमोद जी, क्वेश्चन भारती जी का है, जिसमें उन्होंने MSME की बात की है। Any sum payable by the assessee to MSME beyond the time limit under 15 of the MSMED Act shall be allowed as a deduction on actual payment. So this means my expense will not be allowed if payment is made after the time limit. बड़ा सिंपल सी बात है, करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, मार्च 23 एंडिंग के लिए नहीं है। So you have to just see as on 31st March 2024 जितने भी आपके क्रेडिटर्स खड़े हैं, उन क्रेडिटर्स में कितने MSME हैं,
और जिनको भी 45 दिन से ऊपर हो गए हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्रीमेंट, आपने वो 100% डिसअलाउ करने हैं। और अगर आपको 100% डिसअलाउ करने हैं और आपको जी मेरे को पता ही नहीं है, यू काइंडली चेक द इनवॉइसेस। हो सकता है इनवॉइसेस के अंदर ही उद्यम आधार मेंशन है, और आपको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स पूरे करने हैं। And the second question there would be on interest. Because if it is a written agreement, and then within it is then you have to see, irrespective of agreement, it has to be within 45 days. If it is not a written agreement, then 15 days. Then if it is not paid within that date and during the year, even if it is paid, then interest 3 times the bank rate on a compounded monthly basis, and that interest is not allowed as a reduction. So उसका भी आपने ऑडिट के अंदर पूरा ध्यान रखना है। सो यस, क्लाइंट्स को पहले बता के रखिए कि एमएसएमई अगर से आप अगर काम कर रहे हैं, और हो सकता है हमारे यहाँ पे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो एमएसएमई में खुद रजिस्टर्ड हो, तो अपना तो खुद ध्यान रखिएगा। हम लोग तो रजिस्टर्ड हैं, आप लोग भी अगर जो रजिस्टर्ड हैं, सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। Pramod sir, with your permission, can I introduce our panelist for the day and welcome him, CA Ayush Goyal. हाँ प्लीज सर। हाँ sir. I would just keep it short. CA Ayush Goyal, he loves teaching and training and has been a mentor to various successful CA aspirants. He has been traveling all across the country as a resource person, speaker, and has been invited by various institutes, including ICSI, ICMAI, ICAI, and various other branches and study circles. He is presently engaged with Messrs. BAS and Company LLP, Chartered Accountants, as a designated partner and heads the direct tax division of the firm. He is he cleared his CA in the year 2012 with 39th All India rank and scoring highest in paper of direct taxation. With these words, I welcome CA Ayush ji. Welcome, sir. Ramesh sir will not be with us today because he is out of station right now and will not be able to join. So I would leave it up to both of you to continue the panel discussion and keep answering the questions. Thank you so much. आयुष जी को अपना वीडियो ऑन तो करने बोलिए। हाँ सर, तभी आपका ना स्पॉटलाइट पे आ पाएगा। आयुष जी पे आपका वीडियो ऑन कीजिए। स्पॉटलाइट। प्रमोद सर को बिना देखे मन नहीं भर रहा था। आयुष जी आपको भी बिना देखे मन नहीं भर रहा था। आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते तो मजा नहीं आता ना पैनल डिस्कशन में। यदि आपके इंटरनेट का इश्यूज है तो वीडियो ऑफ कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एन इंटरनेट इश्यूज देन प्लीज पुट ऑन योर वीडियो। अनूप जी आप प्लीज ऐड इसमें, आप भी इसमें ऐड हो सकते हैं। नहीं, मैं आई एम साइलेंट लिसनर। मेरे को आई एम लाइक मैं बहुत ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। प्रमोद सर हैं इसलिए मेरा बहुत ज्यादा ध्यान था कि मैं सुनूंगा सर को। ठीक है सर। सो सर, अप टू बोथ ऑफ यू, यू कैन टेक द थिंग्स एज यू लाइक। आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स में करना है कि आप लोग दोनों आपस में डिस्कस करेंगे। द कॉल इज योर्स। थैंक यू। So members, if you are having any question, you can unmute or you can put your question in the chat box, please. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। प्रमोद जी ने तो सारे क्वेश्चन जो है साइमल्टेनियसली हर 5 मिनट में ले लिए, और खुद आप तो खुद भी पूरे सेशन में क्वेश्चन पूछते रहे, तो मेरी क्वेरी तो बची नहीं मेरे को लग रहा है। सारे क्वेश्चन रिजॉल्व कर दिए मेंबर की। आंसर इतना कॉम्प्रिहेंसिव पीपीटी था कि उसमें सब कुछ कवर्ड था, नथिंग वाज लेफ्ट आउट। एकदम। नीतीश जी, प्रमोद सर को यदि आपने चुन लिया है टैक्स ऑडिट में ना, और वो सर एग्री कर गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि टैक्स ऑडिट पर किसी की क्वेरी रहेगी नहीं। सर स्टार्टिंग से ही सर ऑलवेज इंटरेक्टिव रहते हैं। मैंने टैक्स ऑडिट का सेशन और प्रमोद सर का हो, आई नेवर मिस्ड। मतलब मुझे ऑलवेज आई लव टू हियर हिज सेशन।
शुरू से मतलब from after immediately after 5 minutes he made the session interactive. So that was very very great. Pramod sir, we salute you. Calcutta always look forward towards you. सर आयुष हमारे कलकत्ता का ही उभरता हुआ है सर, सो इसे भी आपका आशीर्वाद चाहिएगा आयुष को. आयुष जी. थैंक यू. नहीं सर, प्रमोद सर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा दिल्ली काफी बार आना जाना हुआ है और मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मैंने आपका 1-2 सेमिनार्स वहां पे अटेंड किया है. तो जो अनूप भैया बोल रहा है रेजोनेट द सेम थिंग कि मतलब ये इट्स ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम यू. एंड क्या होता है जितनी बार मैं अटेंड करेंगे सर उतनी बार नया कुछ सीखने मिलता है. आज अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू माय अदर कमिटमेंट्स मैं अभी बहुत लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू लर्न फ्रॉम यू ऑब्वियसली सर. थैंक यू फॉर सो नाइस वर्ड्स. थैंक यू सो मच. ठीक है सर. कोई और क्वेश्चंस हैं अगर, सो वी कैन टेक अप दोस क्वेश्चंस. I think Naveen we can. नहीं, 1-2 कुछ चैट बॉक्स. अच्छा नहीं, सिर्फ नहीं, थैंक यू सर ने मैसेज. कवर कर लिए हैं, सर ने कवर करनी है क्वेश्चंस. ठीक है सर, फिर अभी करेंगे. So I would request Anup ji, may I request you for the formal vote of thanks to both the speakers. It is a wonderful opportunity for me, in fact, to give a formal vote of thanks to Pramod sir, our All India speaker, not only on tax audit, he is a vivid speaker on many other subjects also. Like हमारी कलकत्ता की audience Pramod sir को tax audit के लिए जानती है, but I know pretty well Pramod sir is very active in other social media also, and I used to get updated on day-to-day basis when there is any judgment, any important judgment which is related to income tax or any other matter. He used to share all those judgments also, and as in his concluding part also, he shared ki on an average there is a question bank being prepared by Pramod sir and his team, so we can always access to his question bank. Also we can always put up those questions in there. So this is the way the education, like he is very passionate about educating our CA members. So we really salute you, Pramod sir, for deep insighted your passion for teaching your colleagues, CA professionals across the country. So on behalf of Calcutta audience, on behalf of Views Exchange Chartered Accountant Study Circle, we owe to you, sir, and we give you a hearty vote of thanks. Thank you so very much. The most interesting part of it is, sir, while during your session itself, you keep your audience completely engaged, and that is the most wonderful part. In fact, the members got scared कि अब Pramod sir next क्या पूछने वाले हैं, तो हमें क्या जवाब देना है. That was something scaring also, so we should be very updated while joining your session. But at the same time, it is very interactive, and that keeps the entire audience engaged. So thank you so very much. We salute you on behalf of Views Exchange Chartered Accountant Study Circle. Ayush ji, there are a lot of things to learn from Pramod sir. How you can able to keep your audience engaged. प्रमोद सर से अच्छा कोई नहीं बता पाएगा. कंटिन्यूअसली एक वो 3 स्टेटमेंट देंगे, उसमें वो तुरंत ऑडियंस को एंगेज कर लेंगे. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिज सेशन, एंड आई ऑलवेज रिकमेंड कि टैक्स ऑडिट पे हो तो प्रमोद सर को बुलाओ. यदि वो मतलब इफ यू कैन स्पेयर एबल टू स्पेयर सम टाइम फॉर अस, that is the wonderful part. So thank you so very much, sir, for accepting our invitation on behalf of Views Exchange. And thank you, audience, the entire audience. Without you, this session would not have been possible. You were continuously engaged with Pramod sir. You were putting your answers in the chat box, whether it is correct or whether it is incorrect.
that is immaterial, but you also continuously engage with Pramod sir. That was very great on your part. सुनील जी, आप गुवाहाटी से ज्वाइन किए, मुझे देख करके बहुत सुखद आश्चर्य हुआ. सुनील जी मेरे कलीग हैं, मतलब वी वर पार्ट ऑफ दैट टीम. सुनील शर्मा जी, आप यदि होंगे तो थैंक यू सो वेरी मच इंडिविजुअली टू यू. आप गुवाहाटी से ज्वाइन किए, एंड आई एम सीइंग मेनी ऑफ द पीपल हु हैज जॉइंड अक्रॉस. So thanks to each of the audience who has joined in this very, very interesting session. So thanks to all of you. Over to Naveen ji. Thank you so much, sir. With these words, I would like to now close the session. And in case Ayush, she has anything to say. Ayush ji, आप muted हैं. हाँ, आप muted Unmute हैं. I करिए. think the questions have been answered, and जब हम लोग समुंदर में डुबकी लगा लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर थोड़े देर आराम का मन करता है. और कुछ अगर हम बोलने जाएंगे तो मजा नहीं आता है. तो इस सेशन को एप्टली क्लोज करते हैं. क्वेश्चन आंसर्स का था, बट आई थिंक ऑल ऑफ देम आर आंसर्ड. सो लेट्स क्लोज इट इन दिस मोड. एंड आई आल्सो पर्सनली थैंक प्रमोद सर विथ अ व्यू कि जब भी दिल्ली मौका मिलेगा तो सर जरूर टाइम देंगे, ताकि हम सर से पर्सनली भी कुछ लर्निंग ले सकें. Anytime, my pleasure, my pleasure. Thanks Thank to you all. so very much, sir. Thank you so Thank you. much, Thank you so Pallavi. Yes, we are wrapping up the session. Thank you so much. Thank